हेलो ओपीएससी एस्पिरेंट केमिति अछंती आपण माने मु आपन को ए चैनल को हमर वेलकम करूची। आशा करथि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तो मु जानि पड़छि आपण मान मन रे बहुत बर्तन आशंका बा डर देखा जाउथिबो, कारण एग्जाम बहुत आमे पाखकु आसिलानी। तो एग्जाम को आखि आगे रखी करी आमको से भली भाबे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को रिवाइज करिया दरकार। तो संगे संगे आमको जेतेरु जेते क्वेश्चन आमे अधिक जेते प्रैक्टिस करिबा आमे ताको ट्राई करिबा बुझिबा पय, तो सेते आमको बेनिफिट अछि। ओके, तो से सब जिंस को आखि आगे रखी करी वर्तमान हमर यूट्यूब चैनल रे जहाँ भी सीरीज कंडक्ट होउची, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर ओपीएससी पीजीटी एग्जामिनेशन फॉर द पेपर 2 एंड पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो समस्त जिन गुड़ाक आम मन रखा। तो आज जहाँ भी टॉपिक अच्छी मुझे या एनालाइज करी तो एग्जाम पॉइंट रू एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण मैंने बिलीव करेंगे। सो द टुडे टॉपिक इट्स वेरी क्रुशियल फॉर आवर ओपीएससी पीजीटी। बिलीव मी दिस टॉपिक आर रेगुलरली asked in our examination, so we cannot miss this topic before the examinations. So before that I would like to present a brief idea about our course. तो ता पूर्व आपण मान निकट में आम एग्जाम रो जहाँ भी गोटे संक्षिप्त टिप्पणी अच्छी बा भी वैशिष्ट्य अच्छी मु कोर्स को आपण आगे उपस्थापन करने को चाहे। तो इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू दैट ओनली। ओके, सो by paying the 150 rupees आपण केवल 150 टका पेमेंट द्वारा ऑल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाई परिबे ओपीएससी पीजीटी फॉर पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो पेपर 2 आपणकर एंड पेपर 3 आपणकर जहाँ भी ओपीएससी पीजीटी अच्छी पॉलिटिकल साइंस रे, तो आपण 150 टका जहाँ भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अच्छी ओपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पाई परिबे। एथरे कौन कौन फीचर्स अच्छे, यार वैशिष्ट्य कौन, व्हाट आर द फीचर ऑफ दिस कोर्स। ओके, सो आर फीचर्स कौन ना मोर देन 80 पीडीएफ। ओके, तो 80 प्लस पीडीएफ आपण पाइबे, सब पीडीएफ यूनिट वाइज गोटे स्ट्रक्चर गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे। ओके, बुझीपार्टी। तो बिलीव करूँ जे 150 टका आपण पाखे यहाँ किसी भी नुहे, किसी माने किसी भी नुहे। जदि मुझे कहबी आपड़ जब रेस्टोरेंट जी ना फास्ट फूड जी जीवे तो 150 आप बहुत अधिक वेस्ट कर। ओके, इन्वेस्ट करुँच। आप फिल्म जी आप कौन मूवी शो को जी तो मोर देन 150 रुपीज यू इन्वेस्ट, बट दिस कोर्स ओनली 150। इट्स ए हिस्टोरिक थिंग्स विल हेल्प यू फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम नंबर इन एग्जामिनेशन। तो आपणकर एग्जाम रे एटा बहुत बहुत हेल्प करिवो दिस कोर्स। मोर देन ता सहित कौन आमर लाइक एटे अच्छे एटे ना मोर देन आम देखिले एटे मोर देन 80 प्लस पीडीएफ आपन पाई परिबे। देन मोर देन 1600 प्लस क्वेश्चन विथ थ्योरी, 1600 अधिक क्वेश्चन आउ थ्योरी पाइबे प्रत्येक पीडीएफ रे अच्छी जहाँकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ बहुत बहुत इंपोर्टेंट। मु कारण ये कहूँ कारण आपंकर बहुत सांग बर्तमान परचेज कर सारे। एथिरे आमर गोटे ओपीएससी पीजीटी पेड ग्रुप अच्छी जोटे कि आमर कौन हो कहबी तार कौन। तो सेठे कौन हो देखिए बहुत पेड छुआ जॉइन हेले। तो मुझे जानी आपण मैंने कोर्स को परचेज करेंगे आज ना काली करेंगे, किंतु लेट्रे करेंगे कि जल्दी करेंगे आपन डिपेंड करुच्ची। तो मोर कहवा तात्पर्य यहाँ दैट आम कहीं कोर्स को जल्दी परचेज न करी जल्दी एनरोल करके पाठ पढ़ा स्टार्ट करवा। मुझे देखुची बहुत छुआ आज कोर्स को परचेज कर मु आपन को गोटे वीक है कहूँ। तो यहाँ जल्दी जिते आप करेंगे आप रिविजन हो आपंकर गोटे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे रे प्रिपरेशन हम, कारण ए टाइम रे आपन गोटे सठिक डायरेक्शन दरकार, सठिक आपन को नोट दरकार, माने क्रिप्स एंड शॉर्ट नोट दरकार, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दरकार, सेमती गोटे प्लेटफॉर्म माहौल दरकार जोटे कि सब पिला क्वेश्चन प्रैक्टिस करुवे, सार क्वेश्चन देउथिबे, बुझा पड़ुला तुम ये प्रैक्टिस कर सार क्वेश्चन देवे, केते बढ़िया जिनस एटा गोटे। तो ए टाइम रे एटा ही दरकार। I believe that you all are guys intelligent. Okay, you have a no doubt, you have a knowledge, you have a concept clarity, but by considering the competitiveness of the examination, जो एग्जाम जो प्रतियोगिता मूलक आमर स्थिति अच्छी ताकू आखि आगे रखिक ये कोर्सटा बहुत इंपोर्टेंट बुझा पड़ी। तो आप पाइबे कौन 1600 प्लस क्वेश्चन विथ थ्योरी पाइबे। ओके, ता सहित आप कौन पाइबे यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जोटा कि आप ओपीएससी आमर पीजीटी जो पेड ग्रुप अच्छी से पीजीटी पेड ग्रुप रे आपको स्पेशल आपंकर यूनिट वाइज ओपीएससी लेवल क्वेश्चन आप पाइबे बुझा पड़ी। तापर से कौन ना
फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्ले लिस्ट ऑफ वीडियो आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिन कौन ना आपण कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्ले लिस्ट ऑफ वीडियो जो 80+ पीडीएफ अच्छी 80+ पीडीएफ जो आमर अच्छी सबुथर क्लास गोटे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे रे आमे नहीं जारिछु ऑलरेडी आमर प्ले लिस्ट रे यूनिट वाइज टॉपिक कवर अच्छी आपण कवर करि परिबे दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इट्स माय लाइक कंट्रीब्यूशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ओके तो यहाँ हूँ आपंकर कौन ना आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्ले लिस्ट वीडियो को जाई एक्सप्लोर करि पारिबे ओके तो भावतु जे 150 टंका आपन फ्यूचर डिटरमाइन करिवो 150 टंका आपन को हेल्प करि पारिबो जे आपन कौन ना 44,900 रुपीज पर मंथ आपन पाई पारिबा पे कारण ओपीएससी पीजीटी रो पे स्केल आपन देखिबे स्टार्टिंग दा 44,900 ओके तो मुझे जानी आपण मैंने वीडियो कोर्स को परचेज करेंगे कि लेट करेंगे मो कह कौन जल्दी कर दिंतु यहाँ आप बेनिफिट रोके आप बहुत सांग कले परचेज आपको ओके आपड़ कर दिंतु कारण आप जिते लेट करेंगे आपते पछे रही कारण ये गोटे कॉम्पिटिटिव आउ कंपिटिशन आपटे इनक्लूड होगापी यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिन ओके तो मुझे आशा करुँच आप बुझीपारे तो बर्तमान आई वुड लाइक टू स्विच टू आवर टुडे टॉपिक डिस्कशन बर्तमान मु चाहे जे आमर जहाँ भी टॉपिक डिस्कशन अच्छी बर्तमान आज ताको आम डिस्कशन करवा तो आपड़ जो देखिपे ये जो टॉपिक गुड़ाक अच्छी ये टॉपिक गुड़ाक मो प्ले लिस्ट रे देखिए आम यूट्यूब चैनल रे एगुड़ा कवर होना तो एग्जाम पूर्व मत सब जिन कवर करार अच्छी तो जिनटा है कवर करदेवी दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए टीचर टू प्रोवाइड ऑल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बिफोर योर एग्जामिनेशन तो टीचर अनुसार मोर गोटे कर्तव्य रही आपको एग्जाम पूर्व सब जिन ओके तो बर्तमान आम क्विकली आरंभ करवा बिना विलंब आम देखा सिस्टम एनालिसिस स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस आम देखा अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी तो बहुत भल इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइलेंटली कॉपी पेन धरी बसंतु आउ बुझा चेष्टा करें तो प्रथम आम कौन देखा ना सिस्टम एनालिसिस बाय डेविड हेस्टन फास्ट वी विल लुक द सिस्टम एनालिसिस बाय डेविड हेस्टन ओके तो डेविड हेस्टन इन हिज बुक अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल सिस्टम अप्रोच तो डेविड हेस्टन तांकर जो बुक अच्छी ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ रे से इंट्रोड्यूस करथिले कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम अप्रोच ओके द सिस्टम एनालिसिस डेविड हेस्टन कौन करथिले तांकर जो बुक अच्छी एटा इंपोर्टेंट आपन एटा मन रखिबा पड़ियो ना को बुक ना सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन व्हिच बुक डेविड हेस्टन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम अप्रोच इट्स ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ओके Then David Easton described the political system and its environment using an input-output model. तो डेविड ईस्टन कौन करथिले यूज करथिले व्हाट इनपुट आउटपुट मॉडल फॉर व्हाट फॉर describe the political system and its environment okay so environment political system like a environment there is input and output model तो ये जो आमर परिवेश भली जो पॉलिटिकल सिस्टम बा राजनैतिक व्यवस्था अच्छी एटा गोटे कौन इनपुट आ आउटपुट मॉडल रे आमर कौन विस्तृत भाव में वर्णना कराई क्या द्वारा डेविड ईस्टन द्वारा तो आप मन रखिए जे इनपुट आउटपुट मॉडल बाय डेविड ईस्टन ओके द पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन ऑपरेट थ्रू एन इनपुट एंड आउटपुट मॉडल तो से कहवा कौन चाहूँगी ना पॉलिटिकल सिस्टम्स ओके फंक्शन और ऑपरेट थ्रू द इनपुट एंड आउटपुट मॉडल जदि आम देखा इंडिया गोटे राजनीतिक व्यवस्था अच्छी आमर ये कौन हो लॉ फर्मुलेट करा लॉ इम्प्लीमेंट करा लॉ को एक्जिक्यूट करा तो ये जिन गुड़ाक आम कौन दरकार गोटे इनपुट दरकार जोटा कि लोक मैंने कौन कर इनपुट होगला आमर बा आम कहीपर गोटे एनवायरनमेंट हूँ पॉलिटिकल सिस्टम से इनपुट भाव कम कर किए आमर लाइक डिमांड हो आमर आम कहीपर गोटे प्रकार सपोर्ट हो क्या द्वारा लोक मान द्वारा हो दैट इज इनपुट एंड जो आउटपुट हो लॉ बाहर दैट इज हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन Input originate from the environment in the form of demand and support which are then proceed into output as a binding decision and policy. तो demand और support लोग demand कर like people हो ना हमारे pressure group हो we demand then the law and policy come out as a in the form of output as a binding policy and the act or enactment तो गोटे binding policy बा आम कहि परिबा गोटे बाध्यतामूलक कौन गोटे रेगुलेशन बा नियम आसुची कौन कौटू आसुची आमर
आमर कौन द सिस्टम रू आसूसी पॉलिटिकल सिस्टम रू कि भाव ना इनपुट आसला फल आमर गोटे बाइंडिंग कौन लॉ बा एनाक्टमेंट आसूसी जोटा कि आम कहते कौन ना इनपुट आउटपुट मॉडल इनपुट जमी आप कंप्यूटर में किसी इनपुट बा टाइप करेंगे सीटा आप आउटपुट अनुसार किसी गोटे सिस्टम शो कर ओके ना आप प्रिंट आउट किसी करेंगे ना किसी गोटे कौन करेंगे किसी गोटे प्रडक्ट करेंगे बाहर करेंगे कंप्यूटर जिनस ओके तो इनपुट आउटपुट है सेमती आम पॉलिटिकल सिस्टम रे लोक कौन करती जे हाँ आमको सुभद्रा योजना दरकार आमको वोमेन एम्पावर दरकार एम्पावरमेंट दरकार तो गवर्नमेंट कौन कला सुभद्रा योजना ये बाहर कर दो दैट इज हाउ आउटपुट तो इनपुट एंड आउटपुट ओके and these binding decision contribute to the political stability by addressing the demand and support from the environment जहाँ भी आम डिसीजन आसे सी कौन पे डिसीजन नि जाए ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गोटे मेंटेन करने कि भाव ना लोक मान जहाँ भी डिमांड अच्छी आ लोक मान जहाँ भी नीड अच्छी ताकू फुलफिलमेंट करा जाए विभिन्न प्रकार पॉलिसी आमर एनाक्टमेंट करा जाए बुझा पड़ुछि देन डेविड ईस्टर्न एम्फासाइज द पॉलिटिकल सिस्टम ए सेट ऑफ इंटरैक्शन वेयर अथॉरिटेटिव वैल्यू आर आलोकेटेड तो ये आपको बुझार अच्छे ए वैल्यू मीन्स कौन ना बहुत पिला कन्फ्यूज होती वैल्यू मान हूँ जोटा कि आमर कौन रिलेटेड विथ नॉर्मेटिव रिलेटेड विथ फिलोसोफिकल आइडिया रिलेटेड विथ नॉर्मेटिव कनोटेशन जोटा कि आमर प्लाटो हो गले जोटा कि आमर क्लासिकल बा आमर ट्रेडिशनल अप्रोच टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आम यूज करथिले सेटा आम वैल्यू कहते जोटा कि आम कहीपर गोटे वैल्यू लेडेन कथा ओके तो वैल्यू मैंने आम कौन वैल्यू इट इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी तो मोर कहबार तात्पर्य कौन ये जो वर्ड वैल्यू यूज कराई ए वैल्यूर अर्थ हूँ कौन इम्पिरिकल कनोटेशन मीन्स कौन आम कहीपर गोटे अर्थ आम कहीपर गोटे प्राइस ओके वैल्यू मैंने आपको बुझार अच्छे यहाँ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जोटा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कौन कहते ना आइडियल पर्सपेक्टिव्स कथा कहते से आदर्श कथा कहते से कौन हेबा उचित कथा कहते किंतु एट जो वैल्यू यूज कराइटा से जिनस नुहे यहाँ कौन से कहूँ रियलिटी कथा कहूँ से कहूँ प्राइस कथा कहूँ से कहूँ अर्थ कथा कहूँ जहाँ भी आमर अथॉरिटी अच्छी से जहाँ भी डिसीजन नौकरी से गोटे अर्थफुल आम मानवा दैट इज हाउ द मीनिंग ऑफ द वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टर्न इन दिस स्टेटमेंट तो आप बुझार अच्छे प्रथम से क्वेश्चन पचारिदेवे ना डेविड ईस्टर्न यूज द टर्म अथॉरिटेटिव वैल्यू आर allocated here the word value means what दे ऑप्शन देवे नॉर्मेटिव देन दे देवे से फिलोसोफिकल देन से दे देवे आउट टू बी एम्पिरिकल कनोटेशन तो आपन गोटे क्लियर यार अछि ना एटा गोटे एम्पिरिकल कनोटेशन कोन एम्पिरिकल कनोटेशन अछि बुझा पड़छि एम्पिरिकल कनोटेशन ओके तो आपन एटा मन रखिए बुझा पड़छि तापर आगु बढ़िबा तो आपन विषय कोर्स विषय कहि जाय 90+ पीडीएफ दिस आपन क्लियर अछंती इंटरेस्ट अछि मते कनेक्ट करि परिबे कोनथरे ना यू कैन कनेक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम आईडी जोडा कि आपन जानछन समस्ते तापस प्रधान @ एटा हूँ मोर टेलीग्राम आईडी नचेत आप मत कनेक्ट करेंगे कौटे ना ईमेल आईडी मध्य अच्छी मोर ईमेल आईडी जोटा कि आम कहीपर तापस प्रधान 42@gmail.com है तो आप मत ईमेल आईडी कनेक्ट करेंगे अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी थ्रू योर टेलीग्राम आईडी ये जिनसा आप बुझे तमें आगू बढ़िया आम बढ़िया आम कौन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आप बुझीपारे डेविड ईस्टर्न जनरल सिस्टम थ्योरी कौन आप मन रखिए से यूज करते कौन ना इनपुट रे डिमांड कथा यूज करते सपोर्ट कथा यूज करते फीडबैक कथा कहते आउटपुट रे से कौन कहते ना अथॉरिटेटिव वैल्यू आर आलोकेटेड वैल्यू मीन्स कौन गोटे एम्पिरिकल कनोटेशन आउ कौन मन रखिए आप मन रखिए गोटे इंपोर्टेंट नहीं सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ से बुक रे से कौन देथिले आमर ना आमर देथिले कौन जनरल सिस्टम थ्योरी आपन देथिले बुझा पड़छि एटा आपन में गोटे भल पिक्चर मध्य अछि जोटा कि आपन हेल्प करिया बुझिबा पे एठी जमती देखि उठे से कहले पॉलिटिकल सिस्टम गोटे एनवायरनमेंट ओके गोटे परिवेश लाइक दैट ओके तो एनवायरनमेंट से कहउछन आपन देखुते डिमांड रहला गोटे पट सपोर्ट रहला आ गोटे पट कोन आसला डिसीजन आसला आ एक्शन आसला पुणी से डिसीजन एक्शन को बेस करी सेथरे मध्ये गोटे फीडबैक गोटे क्रिएट करिवे लोक जोटा कि जदि सपोर्ट करिवे से पॉलिसीटा रहिबो सरकार रहिबो जदि लोक आको अपोज करिवे तो पॉलिसी will be like
defunct and also the government will be removed. तो से जिन गुड़ाक से डेविड हेस्टन बुक जो अच्छी सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ आप देखी पारे 1965 बुक तो यहाँ भलसे सी को एलाबोरेट कर तो पिक्चर टाक सब आपड़ कौन करेंगे मन रखि थे आटा को आपने ओपीएससी प्रिपेयर होती गोटे भल डायग्राम रे प्रेजेंट करेंगे एग्जाम जोटा कि आपको बहुत बहुत हेल्प कर ओके यहाँ हूँ आप कौन ना डेविड हेस्टन जनरल सिस्टम थ्योरी बुझा पड़ी से कौन करते ना जहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी एक्स वाई जेड डेमोक्रेटिक हो नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो अथॉरिटेरियन हो टोटलियन डेमोक्रेट नॉन जहाँ भी नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो सब सिस्टम रे आपन जति ए जो कॉन्सेप्टटा डेविड हेस्टन रो अच्छी पकईकि यूज करेंगे तो आप देखिपारे से पॉलिटिकल सिस्टम किभଳି भाव से जगार फंक्शन करुच्ची सो यू कैन ऑल्सो स्टडी द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय यूजिंग द डेविड हेस्टन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी बुझा पड़ी इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको बुझार अच्छे एट एनी कॉस्ट ओके बुझा पड़ा तापर नेक्स्ट आम देखा कौन ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस तो आप देखा कौन आम स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस अच्छा स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस कौन ना गैब्रियल आलमोंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन हिज बुक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच तो प्रथम आप मन रखियार अच्छे द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच ये जो दुईटा बुक अच्छी कार आमर गैब्रियल आलमोंड से इंट्रोड्यूस करथिले कौन ना गैब्रियल आलमोंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ओके बुझा पड़ी तो आपको आप मन रखिबार अच्छे देन he discusses various features and stages of the political development as well as the input function of the political system. So here Gabriel Almond did discuss about the different the stages of the political development. ना political development बा आम कह राजनीति विकास किभଳି भाव होता there are different stages under which the political development are basically taken place okay so that is how discussed by the Gabriel Almond stages of political development कथा से कही बुक रे politics of developing area and comparative politics a developmental approach आपन को मन रखिबार अछि then Gabriel Almond introduced the concept of structural functionalism in his book the politics of developing area this thing we have discussed he argued that the system approach is superior to the process approach because it represents the totality of the political system. And Almond identified 4 stages of the political development that is how primitive 1, traditional 2, transitional 3 and modern system 4. तो आपन एटा मन रखियार अछि ना आलमोंड आइडेंटिफाई 4 स्टेजेस ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो चारिटा स्टेज कथा कहिथिले ना पॉलिटिकल डेवलपमेंट चारिटा स्टेज रे हुए फर्स्ट हम देखले कोन प्रिमिटिव सेकंड ट्रेडिशनल एंड वी थर्ड वी हैव सीन द ट्रांजिशनल एंड फोर्थ वी हैव सीन मॉडर्न सिस्टम ओके तो प्रिमिटिव ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न सिस्टम दैट यू नीड टू रिमेंबर ओके तो चारिटा स्टेजेस कथा पॉलिटिकल डेवलपमेंट कथा कहिथिले कि आलमोंड कहिथिले देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट हाउ many stages of the political development discussed by Almond and there are 4 stages of the political development what are that primitive traditional transitional and modern system that you need to remember it's very very important for your exam okay तो एटा बुझिले आपण तो एटा क्वेश्चन उठुची ए सर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म माने कोन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म माने कोन से कहू जति कोन ना हमर पॉलिटिकल सिस्टम रे डिफरेंट स्ट्रक्चर अछि it can be your like social structure it can be your political structure social रे आपण कहू फैमिली कथा हला आपनकर इंस्टीट्यूशन हो ओके then you can also take the example of different organization like NGO civil society okay charity okay so these are कोन structure हम कहि परिबा गोटे सोसाइटी रो okay and they function in a different way like आमर देखा फैमिली रोड अलग कम थी पॉलिटिकल पार्टी रोड अलग कम थी सोशल मीडिया अलग कम ओके देन आम देखिले प्रेशर ग्रुप हो सिविल सोसाइटी हो तांकर रोड अलग कम तो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट कम अच्छे तो से जो फंक्शन करूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर द हाउ द डिफरेंट स्ट्रक्चर आर फंक्शंस इन सच ए वे तो ताकू डिस्क्राइब करने गैब्रियल आलमोंड कौन कले प्रेजेंट कले गोटे आइडिया दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच इन हिज बुक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया ओके तापर नेक्स्ट टाइम देखिबा ना अकॉर्डिंग टू आलमोंड देयर आर 4 की इनपुट मॉडल इन पॉलिटिकल सिस्टम दैट आर सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ओके से कौन कहले ना केतरे कौन अच्छी ना 4 की इनपुट मॉडल अच्छी से इनपुट रे डिस्क्राइब करले कौन ना डिफरेंट स्ट्रक्चर आर देयर सो
Gabriel Almond describe the different structure in input model. तो input model रे हमर कोन Gabriel Almond different structure कथा से describe करले जेमति से कहले ना political socialization एटा गोटे फंक्शन हे गला political socialization अच्छा ए फंक्शन करूची कि so political socialization is a function and who perform this function ना it is performed by organizational like families तो family your family is a first organization of society. After family your like the village, after village your commune, after village your after commune your what, your block, after block your district. So this is how the society are evolved, and family as a organization like based on the political socialization. So family हमको कौन करे ना हमको socialize करे, हमको कौन करे सामाजिकता सिखाई थाए, किए करे सिखाई थाए family ना family help to learn different things in society, for that matter in political, and how it is the concept political socialization. तो हमें मन रखले एटा political socialization done by family, family structure and it best for do the function of like political socialization. Then interest articulation जोटा कि carried out by interest group और pressure group. तो आम देखले कौन प्रेशर ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है, तो फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन दैट मीन्स से मैंने कौन करती ना तांकर इंटरेस्ट को सब बेले कौन करती फुलफिल करने डिमांड करती अब दे प्रेजेंट बिफोर द गवर्नमेंट. सो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट को से सब बेले आर्टिकुलेट करती इंटरेस्ट को से प्रेजेंट बिफोर द टेबल. तो आप प्रेशर ग्रुप ओके एंड इंटरेस्ट ग्रुप आम कहते ना प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप दे आर ऑल्सो द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी. बुझा पड़े तो यहाँ गोटे प्रकार स्ट्रक्चर है गोटे फंक्शन है. सो दिस इज वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द फंक्शन लाइक द प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप डू लाइक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. देन इंटरेस्ट एग्रीगेशन मैनेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी. आमर पॉलिटिकल पार्टी मध्य सोसाइटी रे एज ए स्ट्रक्चर एंड हाउ द पॉलिटिकल पार्टी function in a like society as a structure ना दे बेसिकली इंटरेस्ट एग्रीगेशन. सो से कौन करती ना इंटरेस्ट को कलेक्ट करती विभिन्न प्रकार इंटरेस्ट को एग्रीगेट करती और से प्रतिश्रुति दियंती ना दे कलेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे लाइक प्रोवाइड अ प्रॉमिस टू द पीपल that they will fulfill this much promise if they got elected. So that is how the political parties. तो political party कौन करती जैसे से इलेक्शन रे इलेक्टेड हुंती तो से कौन करती ना आपण मानकर इंटरेस्ट को फुलफिल करने काम करती. तो यहाँ है कौन political party also a part of the your society as a structure they function different way. तापर आप क्वेश्चन पचारि पारती सर मीडिया कथा आपड़ कहना. तो मीडिया आमर आसीगला ये किए मास मीडिया और सोशल मीडिया. तो मास मीडिया और सोशल मीडिया दे फंक्शन लाइक ए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. तो से कौन करते दे बेसिकली ट्राई टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम the government to the citizen and citizen to the government. So that is a political communication. So it is a one type of organization who help to communicate between the government to citizen and citizen to the government. So से कौन करती जहाँ भी आमर इनफर्मेशन अच्छे जहाँ भी आमर सूचना अच्छी राजनैतिक सूचना अच्छी तो ताकू से कौन करती गवर्नमेंट को सरकार ठू सिटीजन को नियंती नागरिक ठू आम सरकार मध्य से माने ट्रांसफर करती. सो mass media and social media also facilitated by this kind of function political communication. आपन एटा बुझिबा चेष्टा करिए प्रथम इट्स वेरी इंपोर्टेंट. ओके तो से माने क्वेश्चन पचारिबे ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट मॉडल ऑफ बाय द गैब्रियल आल्मंड. एथि मध्यरु कोटा गोटे इनपुट मॉडल होछि गैब्रियल आल्मंड कर. तो यू नीड टू रिमेंबर इट्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. से माने कोन करंती दे विल आल्सो आस्क ए क्वेश्चन लाइक मैच ऑफ द फॉलोइंग or they can ask the question in form of choose incorrect and correct mail. तो से माने चारिटा दे देथिबे एपड़ तार कोन देथिबे ना को स्ट्रक्चर कौन फंक्शन करुच्चे. तो से कौन करते आपन को गोटे पटे फंक्शन दे देथिबे गोटे पटे स्ट्रक्चर दे देथिबे. दे विल प्रोवाइड द स्ट्रक्चर वन साइड and in another side they will provide the function of the specific structure by the specific structure. And you need to very clear about this thing that which structure belongs to which function. So you have to be clear that thing. Okay आपन को सेटा मन रखियार अछि जे स्ट्रक्चर कोन फंक्शन कोन बुझा पड़छि. ओके याकू मन रखिबे.
देन आमको जब क्रोनोलोजी से पचारती इनपुट फंक्शन तो आप मन रखार अच्छे जे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भाई फैमिली कि भाव आमको हेल्प करे ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पीयर ग्रुप रे आम कौन होता पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आम कहीपर आम समाज विषय जानू आम राजनीति विषय जानू कौट जानू फैमिली हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो पीयर ग्रुप हो देन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है आमर जोटा कि इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप को हेल्प करे आमती इंटरेस्ट एग्रीगेशन है जोटा कि पॉलिटिकल पार्टी ओके इंटरेस्ट एग्रीगेशन पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल socialization by family interest articulation by interest group okay then political communication by mass media so this is how your input function work in such a way according to Gabriel Almond and guys you need to remember this thing in a chronological order and it's very important okay ओके तो आपण पाखे गोटे अच्छे आमर कौन ना आपंकर गोटे भल पिक्चर अच्छे जोटा कि आपड़ बुझीपारे पिक्चर मैंने आड कर ऑब्जेक्टिव कौन जोटा कि आप हेल्प करेंगे बुझापी द ऑब्जेक्टिव बिफोर टू एडिंग दिस पिक्चर टू शो यू दैट हेल्प यू लाइक रिमेम्बरिंग द थिंग्स इन भेरी इजी वे जमी आप देखिए लिखाई कौन सिस्टम फंक्शन लाइक सोशलाइजेशन रिक्रुटमेंट एंड कम्युनिकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट थिंग आम यहाँ ऑलरेडी देखी तो प्रोसेस ऑफ फंक्शन कौन ना आम देखिले कौन ना जोटा कि इनपुट रे आम देखिले व्हाट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड ऑल्सो वी सी द like the what we have seen political socialization then output रे हम देखले कौन ना output रे अच्छी policy implementation policy making और policy आम adjudication okay तो this is how the process of function according to your Gabriel Almond okay तो this is how the system function तो आपण एटा को बुझबार अछि एटा very important तो सेटा हम देखले ना एटे हम एटा कोन देखले we have seen here what ना he argue that system approach is superior to the process approach because it represent the totality of the political system जहाँ भी आपनर political system अच्छी within political system everything it comes under your system approach okay and it system approach that's why system approach is very important than the process approach so here we have noticed what now this is how the system and system is important than process okay so you need to understand first system then you can automatically understand the process of the system so that is how the objective and the argument forwarded by your Gabriel Almond तो सेटा होची Gabriel Almond को कहिबार उद्देश्य जदि सिस्टम आपण बुझी गले तो प्रोसेस आपण ऑटोमेटिकली बुझी पारिबे तो आपण को एठी कहिबार उद्देश्य कोन आपण मन रखिबे जो क्रोनोलॉजी ऑफ इनपुट फंक्शन ना इनपुट फंक्शन रे कोन के फंक्शन को भले भाबे करे आपण को सेटा बुझिबार अछि सो द objective to telling you all guys that you need to remember the function performed by the different structure and which structure function what function you need to remember that thing that is very important for your examination so if it is clear to you then I would like to switch to the next topic that is authority and legitimacy जदि आपन एटा क्लियर अछि तो मु वर्तमान डिस्कशन करिया चाहिबी हमर अथॉरिटी और लेजिटिमेसी कांसेप्ट तो अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी कांसेप्ट रे फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट तो व्हाट वी विल फोकस विद इन दिस डिस्कशन दैट वी फर्स्ट फोकस इंट्रोडक्शन then understanding power and authority then we shall move to the thinker and contribution तो फर्स्ट हम देखिबा कोन आर उपक्रम देखिबा तपर अंडरस्टैंडिंग देखिबा पावर एंड अथॉरिटी रे डिफरेंस कोन then we will discuss the thinker and contribution बुझा पड़छि तो हम सेटा को देखिबा प्रथम देखिबा what is power is a central concept of political science it is ability to influence and control the behavior of others and it is often said that the concept of power hold the same status in the realm of political science as held by the concept of money in the realm of the economics तो पावर हूँ कौन आमर ना पॉलिटिकल साइंस रो गोटे सेंट्रल कॉन्सेप्ट आम कहीपर जमती आमर मनी कथा आम कहूँ इकोनॉमिक्स रे एंड पावर एमती किभली भाव हम हेल्प करेंगे ना पावर बेसिकली आम कहीपर पॉलिटिकल साइंस रे आम जो इन्फ्लुएंस कथा कहते कंट्रोल कथा कहते बिहेवियर ऑफ अदर कथा कहते सो in that perspective the power to understand the concept of power it's very crucial and very important okay तो प्रथम हम देखिबा when we talk about power we shall also try to examine the difference between the power and authority most of time people often associate the power and authority are similar concept but we need to be very clear that these concepts are differ to each other okay in different perspectives तो आम बहुत समय देखुवा पावर और अथॉरिटी एटा हूँ कौन ना परस्पर कौन गोटे कहीपर ना सेटा सिमिलर कॉन्सेप्ट समान भाव कॉन्सेप्ट बट आम से देखा किंतु बहुत डिफरेंस है जमी देखा पावर हूँ कौन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ओके पावर हूँ कौन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इट इज ऑफन आइडेंटिफाइड विथ द परसुएसन प्रेशर थ्रेट
कोहेसन एंड भायोलेंस तो पावर आम जो कहते कौन ना से भायोलेंस रूप नहीं पारे इट कैन टेक द लाइक शेप ऑफ भायोलेंस कोहेसन थ्रेड प्रेशर परसुएसन तो दैट इज हाउ पावर then like power has what the constitutional overtone is absent तो power रे कौन से गोटे सांविधानिक आम कहीपर लाइक मूल्यबोध न थाए so there is no value of constitutionalism okay in with respect to power but when you talk about authority जो आप authority कथा कहते it is from the constitutional power तो अथॉरिटी मध्य पावर कथा कहुई किंतु दैट पावर इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म स्टैंडर्ड वैल्यूज ओके एंड अथॉरिटी इज ए राइटफुल वे ऑफ द पावर ओके हाँ भाई आम अथॉरिटी आम कहते अथॉरिटी भायोलेंस गोटे सेप नियंती दे ऑल्सो टेक द सेप ऑफ भायोलेंस ऑल्सो दे टेक द सेप ऑफ द परसुएसन बट दैट इज हाउ इन ए राइटफुल वे that is how by determined by constitutional norm and value that is how authority and it has both legal and moral overtone तो अथॉरिटी जो आम कहते अथॉरिटी क्या पाखे थाए ना अथॉरिटी गोटे गोटे आम ऑर्गेनाइजेशन पाखे थाए जो ऑर्गेनाइजेशन की आमको लाइक बाइंडिंग लॉ बा बाध्यतामूलक लॉ प्रणयन करता है जोड़ा कि लोक बाध्य मानने को बाध्य कारण इट इज मेंशन बाय आवर व्हाट वी कैन से दैट constitutions and how it is basically mentioned in our constitution through the consent of the people जमती आप एग्जांपल नहीं पारे गवर्नमेंट कौन करे बेले बेले लाठी चार्ज करे लोकों ऊपर तो भायोलेंस यूज है किंतु सेटा को आम कहीपर गोटे राइटफुल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर कारण ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा होता है आ गवर्नमेंट गोटे जेहेतु गोटे इलेक्टेड आ लोक कंसेंट रे होता है तो लोकों को सेटा मानवा पड़ी थाए तो दैट इज हाउ अथॉरिटी ओके तो कन्स्टिट्यूशनल आम नॉर्म बा वैल्यू थाए जोटा कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने अथॉरिटी आमर एक्सरसाइज कर ओके टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर द अथॉरिटी ऑल्सो एक्सरसाइज बाय द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंटेस्ट द गवर्नमेंट ओके बर्तमान आम देखा इफ दिस थिंग इज क्लीयर टू यू पावर एंड अथॉरिटी से स्टेटमेंट रे पचार देबे ना पावर एंड अथॉरिटी पावर इज इक्विवेलेंट टू द कांसेप्ट ऑफ अथॉरिटी तो यहाँ रंग हो भाई पावर केबे भी अथॉरिटी को कौन समान रूप नुहे बा समांतरल नुहे बुझा पड़ो जिनसा आप ओके तो दिस इज हाउ वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो आपको जिनसा बुझार अच्छे बुझा पड़ी पावर हूँ कौन ना इट इज ए डील्स विथ व्हाट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट अथॉरिटी हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हूँ कौन परसुएसन भायोलेसन बट अथॉरिटी राइटफुल वे ऑफ द पावर जदि यहाँ आपको क्लीयर है बर्तमान आम स्विच करवा कौन थिंकर आउ कंट्रीब्यूशन डिफरेंट थिंकर कौन देते आइडिया देते अथॉरिटी को इन ए डिफरेंट वे सो डिफरेंट थिंकर प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और फॉर दैट मैटर अथॉरिटी इन ए डिफरेंट वे सो वी नीड टू रिमेंबर एंड वी नीड टू डिस्कस ऑल्सो दैट थिंग तो आमको डिस्कसन करने आवश्यक जमी मैक्स वेबर है मोर से अथॉरिटी को कौन कहते एज ए फॉर्म ऑफ द लेजिटिमेट पावर गोटे वैधमूलक आम कहीपर गोटे एक्सरसाइज ऑफ द पावर ना आपन को मानवा ही पड़ो कारण यहाँ लेजिटिमेट ओके यहाँ लेजिटिमेट पावर ओके जमी गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर पावर से लेजिटिमेट आपड़ से कहीपर यहाँ अमान्य बोली दिस इज लेजिटिमेट ओके बिकज दिस इज लाइक परफॉर्म बाय ए अथॉरिटी ओके देन थ्री काइंड ऑफ अथॉरिटी कथा मैक्स वेबर कहते गोटे ट्रेडिशनल गोटे हूँ कैरिस्मेटिक आउ लीगल आउ रैशनल ओके सो ये जो थ्री काइंड ऑफ अथॉरिटी कहते आमर मैक्स वेबर आपको मन रखार अच्छे जोटा कि आपंकर ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक आउ लीगल आउ रैशनल यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट होगा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जे किए कहते थ्री काइंड ऑफ अथॉरिटी ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक आउ लीगल रैशनल गोटे क्वेश्चन होगा आप मैक्स वेबर आपड़ यहाँ मन रखिए एंड ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक आउ लीगल रैशनल तब रॉबर्ट डाल पुणी ये कौन कहले ना इंट्रोड्यूस द कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर आपन रॉबर्ट डाल कौन कले कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर को इंट्रोड्यूस करें ओके एंड ही सेड दैट पावर इज ए रिलेशनल कॉन्सेप्ट इट इज द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय अदर इवन अगेंस्ट द विश तो आपको यहाँ मन रखार अच्छे जो कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर कौन करे ना कोहेसन कथा कहे भायोलेसन कथा कहे परसुएसन कथा कहे यहाँ हूँ कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर पावर दुटा डायमेंशन अच्छे गोटे हूँ कन्वेंशनल है जोटा कि रॉबर्ट डाल आम देखिले आउ गोटे देखिए आम नॉन कन्वेंशनल जोटा कि आम वी विल डिस्कस फर्दर ओके एंड द पावर इज रिलेशनल कॉन्सेप्ट जोटा आम देखिले पावर हूँ रिलेशनल कॉन्सेप्ट भाई पावर जो आम कहते से आप गोटे व्यक्ति को रिलेट करा पावर कथा आप यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर विथ रेस्पेक्ट टू द अदर्स ओके ओके सो यू कैनॉट से दैट वी एक्सरसाइज द पावर इन द मून और इन द हेवन because in heaven or in moon there is nobody that you can exercise the power so power is also reflect in society beyond the society you cannot exercise the power that is how the thing you need to remember तो बिना सोसाइटी आप पावर को एक्सरसाइज करें तो रिलेशनल कॉन्सेप्ट गोटे होगा पावर
देन इट बिलीव्स इन यूज ऑफ कोहेरेशन कारण मुझे कही कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर गोटे कौन ना कोहेरेशन उपर बिलीव करे अच्छा सर कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर मीन्स कौन जोटा कि कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर माने आम कहीपर गोटे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को से दर्शाए ट्रेडिशनल भाई आम पारंपरिक भाव पावर कथा आम कौन बुझू ना पावर इज ओनली लिमिटेड टू द वायलेंस पावर इज ओनली लिमिटेड टू समथिंग द परसुएसन समथिंग कन्फ्लिक्ट कोहेरेशन ओके आम से बुझुं पावर मान हूँ कौन दंगा डिफरेंट थिंग देन पॉलियार्की व्यू ऑफ द पावर तो रॉबर्ट डाल कौन करते पॉलियार्की व्यू ऑफ द पावर कथा देते गोटे आप कॉन्सेप्ट अच्छी ना ऑलिगार्की अच्छी ना ऑलिगार्की है आपंकर हाँ पेन चेंज करदे तो ऑलिगार्की आपंकर बुझी ना ऑलिगार्की है आ पॉलियार्की है तो पॉलियार्की हूँ आप कौन यहाँ व्यू ऑफ द पावर किए देते रॉबर्ट डाल देते सी कौन कहते पॉलियार्की ना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पावर इन सोसाइटी इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन ए सिंगल ग्रुप पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन से कहते पॉलियार्की ना पावर इज नॉट लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू ग्रुप okay it is not only limited to a single group or a individual but it is associated with the various organization or association that is how polyarchy view of the power by Robert Dahl तापर आम देखा आगे हेना एरेंडेड कौन देते ना भ्यूड पावर एज ए नॉन कन्वेंशनल भ्यू तो हेना एरेंडेड कौन करते नॉन कन्वेंशनल भ्यू ऑफ द पावर कथा कहते एंड सी ऑल्सो आर्ग्यू दैट पावर इज ए सुई जेनेरेशन तो आप वार्डटा मन रखार अच्छे हेना एरेंडेड कौन करते नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर कथा कहते तो हेना एरेंडेड डिड टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर एंड हियर द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ द पावर मीन्स द पावर एज ए एम्पावरमेंट तो आपको यहाँ मन रखार अच्छे ना हेना एरेंडेड टॉक अबाउट पावर एज ए sui generation means what na power can only be basically exercised when people come together and when people go back to their private life then we can say that there is no exercise of power तो power एटा कोन गोटे collective phenomena power cannot exercised by a single individual तो according to Hannah Arendt power is what sui generation आपन एटा मन रखिबार अछि देन स्टीभन लुकेस तो स्टीभन लुकेस ये कौन कले ना गोटे बुक अच्छी पावर ए राडिकल व्यू प्रथम आप मन रखार अच्छी जे पावर ए राडिकल व्यू पुस्तक क्या द्वारा रचना कर स्टीभन लुकेस ना हु रोड द बुक पावर ए राडिकल व्यू ना दिस बुक रिटन बाय स्टीभन लुकेस एंड हैज गिवन द थ्री फेसेस और डायमेंशन ऑफ द पावर और से कौन करते से तीन डायमेंशन ना कथा कहते पावर पावर तीन डायमेंशन कथा कहते ओके हैज गिवन द थ्री फेसेस और डायमेंशन ऑफ पावर लाइक डिसीजन मेकिंग नॉन डिसीजन मेकिंग सेपिंग डिजायर से कौन करते डिसीजन मेकिंग कथा कहते नॉन डिसीजन मेकिंग कथा कहते सेपिंग डिजायर कथा कहते तो आपको जस्ट मन रखार अच्छी पावर राडिकल व्यू आउ थ्री डायमेंशन ऑफ द पावर देते केते डायमेंशन थ्री डायमेंशन ऑफ द पावर जोटा कि हम डिस्कसन कले डिसीजन मेकिंग नॉन डिसीजन मेकिंग आउ सेपिंग डिजायर देन वी विल सी द नीचे फेडरिक नीचे गोटे पोस्ट मॉडर्न थिंकर से कौन कहते पावर इज ए कैपेसिटी टू डिफाइन रियलिटी रियल रे भाई कौन हो रियल को अंडरस्टैंड करने आमको पावर को बुझबार अच्छे कारण पावर इज ए कैपेसिटी टू डिफाइन द रियलिटी व्हाट हैपन इन रियल सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द रियलिटी इन द सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर एंड पावर इज ए कैपेसिटी टू डिफाइन द रियलिटी ओके इट्स बाय फेडरिक नीचे तापर हम देखले कौन मिशेल फुको तो मिशेल फुको कौन गोटे बुक लिखले डिसिप्लिन एंड पनिश तो मिशेल फुको कौन कले डिसिप्लिन एंड पनिश गोटे बुक लिखले जोटा कि गेव द सोशल थ्योरी ऑफ पावर तो मिशेल फुको कौन कले ना सोशल थ्योरी ऑफ पावर देले सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू रो पावर को से अंडरस्टैंड कले को बुक रे डिसिप्लिन एंड पनिश रे आपन तो प्रथम बुझियार अछि जे डिसिप्लिन एंड पनिश बुक बाय होम मिशेल फुको एंड देयर ही इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द पावर and according to Michel Foucault by Michael Foucault whatever way you can call him that knowledge is power से कहते कौन knowledge is power भाई ज्ञान हूँ गोटे पावर केन्द्र बिंदु आपण पाखे जब नॉलेज अच्छी आपण पावर को कौन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे नॉलेज इज पावर जमी आप OPSC एग्जाम देते तो आपण पाखे जब नॉलेज अच्छी ऑब्वियसली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन यू विल डेफिनेटली गेट द बेसिकली OPSC जॉब ओके यू विल गेट ऑल्सो गुड सैलरी सो है ना नॉलेज आप पावर एक्सरसाइज कले कारण पावर मीन्स कौन ना एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर जदि आपड़ जी माने एग्जामिनर को कन्वीनियंस करें तो आप इन्फ्लुएंस करें एग्जाम कि भाव ना आप एग्जाम को क्वालिफाई करदे तो यहाँ है ना नॉलेज इज पावर तो सेमती हूँ कौन नॉलेज इज पावर अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको आजिका डेट रे जहाँ पाखे भाई नॉलेज अच्छी दे बेसिकली एक्सरसाइज द पावर ओके एंड मिशेल फुको कौन कहते पावर इज एवरीवेयर से कहते पावर सब जगह अच्छे पावर इज एवरीवेयर एंड पावर फ्लो थ्रू आउट द
सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से कहते कौन ना पावर भाई सब जगार अच्छी तुम जोटे देखुच देख जमी आमर कहीपर आमर ब्लड सर्कुलेट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी सिमिलरली पावर exist everywhere, okay, in society. You talk about village, you talk about urban area, you talk about rural area, everywhere power prevail, okay. Even a small a family, the poor family also exercise the power according to Michel Foucault. से कहले ना सोशल थ्योरी ऑफ पावर माने सोसाइटी रे आपण पावर जोटे सोसाइटी कथा कहबे सेटा पावर प्रिवेल हिं करूछ कारण नॉलेज सब जगह अछि. And he instead of macro view of power, Michel Foucault gives a micro view of the power. से कहले पावर रो छोटो छोटो गोटे आपण देखनु ना माइक्रो व्यू देखनु ना मैक्रो व्यू देखिले कौन हम आपण कहबे हाँ स्टेट पावरफुल, हाँ गवर्नमेंट पावरफुल, हाँ से लेजिस्लेटिव बॉडी पावरफुल. This is not only the power exercised power by them only, it is also the power exercised by the village, also the power exercised by आमे कहि परिबा the small organization also. तो दैट इज हाउ मिशेल फुकोस पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको बुझार अच्छी जे डिसिप्लिन ऑफ पनिश रे मिशेल फुको कौन देते इंट्रोड्यूस करते कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को. देन आल्विन, ओके, आल्विन टफलर से गोटे बुक लिखिले कौन पावर शिफ्ट. प्रथम आप मन रखार अच्छी हु रोड द बुक पावर शिफ्ट, किए लिखिले बुक पावर शिफ्ट आल्विन टफलर. और आल्विन टफलर बुक कौन पावर शिफ्ट से कौन करते नॉलेज वेल्थ एंड भायोलेंस. तो पूरा नाटा बुक कौन नॉलेज वेल्थ एंड भायोलेंस एज ऑफ द 21st सेंचुरी. तो से कौन करते थ्री टर्म यूज करते कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर रे ना नॉलेज वेल्थ और भायोलेंस ए तीनटा माध्यम रे पावर को एक्सरसाइज करा जाय थाए. आकु किए कहउछंती आल्विन टफलर कहउछंती तांकर बुक पावर शिफ्ट नॉलेज वेल्थ एंड भायोलेंस. से कहउछंती कोन नॉलेज हे गला वेल्थ हे गला भायोलेंस हे गला ए तीनटा माध्यम रे हम कोन करे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को एनालाइज बा हम डिस्क्राइब करू. जा पाखर नॉलेज अछि दे एक्सरसाइज द पावर, whoever hold the knowledge they exercise the power. जा पाखर wealth अच्छी they also hold the power, whoever hold the wealth they also exercise the power. And violence, by the means of violence one can also exercise the power. violence माध्यम अन्य जने मध्य पावर रो कौन करि परिबे एक्सरसाइज करि परिबे. तापर भाई हम देखिबा एलिटिज्म व्यू ऑफ द पावर. रॉबर्ट मिचेल आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की आपण समस्त जानचंदी. बुक होची पॉलिटिकल पार्टी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑलिगार्की टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. से पचार देबे जे पॉलिटिकल पार्टी बुक किए लिखिचंदी आपण मन रखिबार अछि ना पॉलिटिकल पार्टी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑलिगार्की टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी ना किए लिखिचंदी एटा को रॉबर्ट मिचेल. तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हे गला. आ सेटे से कोन कहचंदी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की. जेतरा आपण जर्मन रे कोन थिला गोटे डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी थिला. से डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी कहले जे हमरो जो पॉलिटिकल पार्टी अछि बेस्ड ऑन प्योरली फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो रॉबर्ट मिचेल्स को गोटे लाइक शॉक लगिला, अरे भाई तुम केमती कहीपर पॉलिटिकल पार्टी से किसी एलिटिज्म ना केमती कम कहीपर से ऑलिगार्की टेंडेंसी ना. तो रॉबर्ट मिचेल तो मानिया लोक ना से एत बड़ गोटे प्रोफेसर से लगी पड़े पढ़ारे अध्ययन करें पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द जर्मन सोशल डेमोक्रेसी. तापर से कौन कले गोटे सोशियोलॉजिकल सर्वे कले, सोशियोलॉजिकल स्टडी कले आ देखिले जे भाई तुम जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी इवेन यू टॉक अबाउट इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ओके, तो सेटे मध्य ऑलिगार्की टेंडेंसी देखा जाउछि जोटा कि केवल फ्यू पीपुल कौन करती पावर को एक्सरसाइज करती. ओके, जहाँ भी तुम कह पॉलिटिकल पार्टी मॉडर्न डेमोक्रेसी कथा कह कि तुम लाइक द कंट्री लाइक द लिबरल डेमोक्रेसी कथा कह. तो सब जगह जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑलिगार्की टेंडेंसी अच्छी. अभी ऑलिगार्की टेंडेंसी ऑटोमेटिकली टेक फॉर्म and to eliminate this thing it's a very hard to eliminate. That's why it's iron law of oligarchy. It's a strong like iron, you cannot destroy the iron. Okay, iron rod, this is not easy job to destroy iron rod. Similarly this is oligarchy tendency prevail in every modern democracy, in every organization of modern democracy, and you cannot eliminate that thing. आपण ताकू केबे भी एलिमिनेट करि परिबेनी. सब हम देखंतु मॉडर्न डेमोक्रेसी जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन कहंतु सेठी गोटे एलिटिज्म बा केतो गोटे फ्यू लोक ताकू एक्सरसाइज करंती. तो सेटा के डिस्क्राइब करले हमरो डिस्क्राइब करले कि हमरो रॉबर्ट मिचेल. तो बुक आपण मन रखंतु पॉलिटिकल पार्टी सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑलिगार्की टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. बुझा पड़छि. तापर हम कंक्लूजन रे देखिबा ना पावर अथॉरिटी और लेजिटिमेसी दे आर डायनामिक कांसेप्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी व्हिच इज सेट टू अंडरस्टैंड होल पॉलिटिकल सिस्टम.
तो पावर हो आपण अथॉरिटी कहतु आपण लेजिटिमेसी कथा कहतु शक्ति कथा कहतु आपण अथॉरिटी कथा कहतु ओके ओके जोड़ा आम कहते कौन प्राधिकरण हो बा आम लेजिटिमेसी कथा कहते जोटा आम कहते कौन वैधता हो तो सेगुड़ा हूँ कौन बहुत गतिशील मान धारणा गुड़ाक कौटे आम राजनीतिक तत्व आम गतिशील धारणा हो गुड़ाक सब आईटा आमको अंडरस्टैंड करे टू होल पॉलिटिकल सिस्टम सो पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी और द डायनामिक concept in political theory which help to understand the what the whole political system entire political system okay eta hocha apanଙ୍କର conclusion तो मु आशा करथि आपन वीडियोटा भल लागिथिबो वीडियोटा लॉन्ग अछि that is not a matter of concern but the thing is that आपन को क्लियर थिबार अछि concept आपन आको रिवाइज करबार अछि आपन बुझिबार अछि जे what is the essence of the today class okay and at the last I would like to request to all you if you like our effort do subscribe do like and do share with your friends okay so thank you guys have a nice day for being part of this lesson jai jagannath